Bismillahirrahmanirrahim. Honorable President, may I have your permission to start the formal proceedings of this special investor ceremony for conferment of Nishan-e-Imtiyaz Military upon General Sahir Shamshad Mirza, Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee, and General Sayyid Asim Ali Ahmad Shah, Chief of the Army Staff. Bismillah करें जनाब. I now invite Mufti Ehsanullah Kakad for recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह की खातिर सच्चाई पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्ताइल न कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ, आदल करो, ये खुदा तरसी से ज़्यादा मुनासिबत रखता है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। May I now request General Sahir Shamshad Mirza to come forward, please. Ladies and gentlemen, General Sahir Shamshad Mirza, Hilal-e-Imtiyaz Military, was commissioned in 1987 in Infantry Battalion. He graduated from Commandant Staff College, Quetta, National Defense University, Islamabad. He also attended MSc Global Security course from Cranfield University, United Kingdom. During his illustrious military career, he served on various command and staff instructional assignments. Appointments include Brigade Major of 2 Infantry Brigades, General Staff Officer at Pakistan Contingent United Nations Missions, Sierra Leone, Director of Military Operations, and Director General Military Operations, Vice Chief of General Staff, Adjutant General, and Chief of General Staff at the General Headquarters. In his instructional appointments, he has been on the faculty of School of Infantry Tactics, Quetta, Pakistan Military Academy, Kakul, and Command and Staff College, Quetta. He has commanded an infantry battalion, each in North Waziristan and Shakma War Zone, and infantry brigade along Gundrik boundary. He also commanded an infantry division in Operation Al-Mizan and commanded 10 corps. He was promoted to the rank of General and appointed as Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee, Joint Staff Headquarters on 27th November 2022. Ladies and gentlemen, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiyaz Military upon General Sahir Shamshad Mirza, Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee. Now I request General Sahir Shamshad Mirza, Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee, to come forward and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz from the President of Islamic Republic of Pakistan.
May I now request General Syed Asim Munir Ahmed Shah to come forward, please. Ladies and gentlemen, General Syed Asim Munir Ahmed Shah, Hilal-e-Imtiaz Military, was commissioned in April 1986 in 23 Frontier Force Regiment and is a recipient of the coveted Sword of Honor of 17th Ortiz Course. He is a graduate of Fuji School, Japan, Command and Staff College, Quetta, Malaysian Armed Forces Command and Staff College, Kuala Lumpur, and National Defense University, Islamabad. He also holds MPhil degree in Public Policy and Strategic Security Management. During his illustrious military career, he has served on various command and staff and instructional assignments. His major staff appointments include Brigade Major of a deployed infantry brigade, General Staff Officer in Chief of General Staff Secretariat, Director Staff in Command and Staff College, Quetta, and Chief of Staff of a Strike Corps. He has commanded his parent unit 23 Frontier Force Regiment, Infantry Brigade, Force Command Northern Areas, and 30 Corps. He has also led Pakistan training contingent in the Kingdom of Saudi Arabia. The General has the unique honor to head both the premier intelligence agencies of Pakistan as Director General Military Intelligence and Director General Inter-Services Intelligence. Before his promotion and appointment as Chief of Army Staff, the General was Quartermaster General of Pakistan Army. He was promoted to the rank of General and appointed as Chief of Army Staff, General Headquarters on 29th November 2022. Ladies and gentlemen, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Syed Asim Munir Ahmed Shah, Chief of the Army Staff. Now I request General Syed Asim Munir Ahmed Shah, Chief of the Army Staff, to come forward and receive the award of Nishan-e-Imtiaz from the President of Islamic Republic of Pakistan. Honorable President, may I have your permission to close the formal proceedings of this special investor ceremony? जी जरूर. All the guests are invited for the light refreshments. Thank you very much. एक ही मुद्दे पे 2 एफआईआरें काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है, मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ, हमारे केस में सो मोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी? कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां, स्पीचेस, चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।